Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Adnan from Excellence Online platform. Today I'm going to teach you about business letters. In business communication we have two segments, oral communication and written communication. In written communication we have different genre of writing, including CV, letters, memos, a report, and letters are the form of business communication. We communicate, a business organization, they have communication through one department to another department, from one organ to another organ. Different companies, industries, means in every segment of business, communication is occur through letters. There are different channels, ways, methods of communication. One of them is a letter writing, business letters. Often we discuss different types of letter, formats of letters, and division of letters, but we are discussing business letters. Business letters, one of them is acknowledgement letter. As you can see here, a type of business letter which is sent to acknowledge the receipt of items, inquiries from individual organ. These kind of letters are written from individuals or organization regarding inquiries or regarding items, quantity, products, means a kind of acknowledgement we have received or we have paid or we have been paid, and many more like this. A kind of acknowledgement of business products, a kind of acknowledgement, acceptance of receiving something. Right? This is kind of acknowledgement, agreement. We have received your items, your inquiries, your questions, acknowledgement question. Most of business firms you will see, they write down acknowledgement letters. They demanded some quantity regarding products they use in their business, they have achieved, they have received. So this is kind of acknowledgement letters. ये लेटर लिखा जाता है जब भी कंपनी है, फर्म में, इंडस्ट्री है, वो जो उन्होंने डिमांड की थी उन्होंने वो रिसीव कर लिया है, वो क्वांटिटी है, वो सर्विस है और आइटम्स हैं, बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं, वो रिसीव कर लिया, तो वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट देते हैं. दिस इज काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट लेटर. इट हैज डिफरेंट फंक्शंस, but basic objective of acknowledgement letter, after receiving or after getting acknowledgement, you have received, you have got, you have achieved, you have been paid or you paid. Number next is apology letter. In business situations, there are different kind of situations, or in business there are different kind of situations, and some of them are a problematic situation, and some situation can lead to misunderstanding or mistakes. As a type of business letters which is usually written to say sorry officially, or expressing your grief, your sadness, means you are quite regretful regarding this occurrence. बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं तो अपोलॉजी करते हैं, ऑफिशियली अपोलॉजी करते हैं, अपोलोजाइज करेंगे, ये अपोलॉजी लेटर लिखा होता है. अच्छा, ये क्या शो करता है? इट रिफ्लेक्ट्स बिजनेस कमिटमेंट, business honesty or business responsibility. This is kind of apology letter. Those are good businessmen, or if we see a professional organization, if they commit any kind of mistake or even not mistake, a basis of misunderstanding, जो आपके competitors हैं और maybe your business partners वो उसको गलत समझ सकते हैं, wrong occurrence हो गया है, तो apology letter लिखते हैं. We are very sorry for this event. Number next is appreciation letters. This is kind of business letter which is written from higher authority, from HR, from seniors, from CEO, from higher management, to appreciate employees, so as to achieve, because they have achieved something extraordinary. आपके जो employees हैं, they perform better, they achieve something extraordinary. जो target थे बहुत ब्रिलियंटली अचीव किए हैं तो लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन कहते हैं. ये लिखा जाता है फ्रॉम HR, फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट, फ्रॉम CEO, इवन फ्रॉम ऑनर, and this is called appreciation letter.
and employees are quite happy. This is kind of encouragement for them to receive this letter. Besides financial benefit, this is moral benefit, a kind of a moral promotion for them. Next we have complaint letters. Like in all fields, there are different complaints. Similarly in business, they have complaint. How to express your complaint officially, and a type of business letter which is written to deal with the problem situation when other attempts. जब आपके जो different channels हैं, let's say social media, or cell phone, or emails, if they are not working well, or you do not get any kind of response, then this letter is written in order to complain. Complaining regarding behavior, services, products, quantity, or dialogue, or agreement, many more things. It is directly addressed to the business problems. ये business problem को deal करता है और business problem से ही link करेगा ये. Next we have circular letters. Circular letter has different objectives. One type of circular letter, it is written within organization to spread one news. Maybe a rule or maybe law within organization में किसी भी system में कोई चीज़ change की थी या कोई event की timing change हो गई थी या कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट है वहाँ पर, तो एक सर्कुलर लेटर होता है. टाइमिंग के बारे में भी हो सकता है. तो सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि रिगार्डिंग पॉलिसीज, इश्यूज, टाइमिंग, इवेंट्स और बिजनेस फॉर्म विदिन ऑर्गेनाइजेशन. नंबर सेकंड, इट कैन बी रिटन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन टू इंट्रोड्यूस समथिंग. कोई इवेंट करवा रहे हैं, बाकियों को भी आपने इन्फॉर्म करना है और इन्वाइट भी करना है. Besides other form of communication, वो आप लिखेंगे to promote, to market your product or event. उसके साथ साथ ये letter भी लिखते हैं. Next we have confirmation letters. It is used to confirm agreement between two parties, which was done verbally. In business, one side we have verbal communication, business communication. Verbal communications is not authentic unless we have written documentations. Besides verbal commitment or verbal agreement, this letter is written for confirmation. Two parties, two organization, or employee or employer, management and employees, when they agree on something or they got job, उनको job देंगे और जो भी policies हैं वो use करेंगे, agreement होएगा उनका, उस पर एक लेटर लिखते हैं, letter confirmation. This is confirm you have been appointed. Your salary has been increased. This is confirmation. There are two organ or two business firms हैं, उन्होंने किसी भी product पे एक agreement किया हुआ है और वो confirmation के लिए this letter is written. Why do we write down this kind of things? One is verbal communication doesn't sound well. और वर्बल कम्युनिकेशन दे डिफरेंट डाउट्स हो सकते हैं और वर्बल कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो रिटन डॉक्यूमेंटेशन होती है तो वहाँ पे लिखा जाता है. नेक्स्ट वी हैव इंक्वायरी लेटर. दिस इज क्वाइट इट हैज क्वाइट डिफरेंट वेज एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंक्वायरी. इंक्वायरी कैन बी विदिन ऑर्गेनाइजेशन. वी हैव वन बैंक और स्कूल ऑफ थॉट, कोई स्कूल हो सकता है, or business firm or any kind of NGO or governmental institutions. False inquiry. Customer, client, a buyer, they will ask something, they will inquire about service, about goods, about product, about quantity, about something else. This is called inquiry letter. जो भी कस्टमर हैं, बायर हैं, क्लाइंट हैं, वो भी प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चंस करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, क्यूरी है उनकी, या सर्विस के बारे में है या कंप्लेन कर रहे हैं और नेक्स्ट से कोई भी डीलिंग हो सकती है, तो उसमें उनके क्वेश्चंस हैं, रिजर्वेशंस हैं, वहाँ पे वो लेटर लिखते हैं, इंक्वायरी लेटर कहलाते हैं. दीज काइंड ऑफ लेटर कैन रिटन बाय एम्प्लॉयज टू. ये लेटर्स एम्प्लॉयज भी लिख सकते हैं, मैनेजमेंट को लिखेंगे, एचआर को लिखेंगे, उनकी भी कुछ क्यूरीज हो सकते हैं, क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन क्यूरीज और इंक्वायरीज होंगे, वो डिस्कस करेंगे वहाँ पर. नेक्स्ट से जो लेटर्स होते हैं गवर्नमेंट भी लिख सकती है एंड एनजीओ को मेंशन लिखेगी, और सेकेंड इज प्राइवेट फर्म को भी लिख सकती है रिगार्डिंग इंक्वायरीज. जब वो फाइनेंस इंक्वायरी होगी, लॉ इंक्वायरी और एम्प्लॉयज इंक्वायरी,
or other business inquiry. Next we have cover letter or covering letter. This is quite common in our society. Job applicant, all job applicant, besides CV, they have one letter, a one-page letter. A one-page letter is known as a covering letter or cover letter or job letter, in which it is written that he or she is qualified, has ability, guts, potential, skills for this job. जो applicants हैं उनके skills, determinations, qualification, one is a qualification, experience, skills, इस job से measure करते हैं. CV plus letter, one page letter, ये combine करते हैं, then you can apply for job. Next we have order letter, right? Or we are not discussing these, we will discuss further these letters. Last we have sales letters. One side we have sales promotion letters and another is sales letter. Sales letter are kind of a letter. This is marketing tool. If you want to market your service, a product or goods, so we have sales letter. This letter is written one side salesman, number second sales letters. जो आपने मार्केटिंग करनी है वो सेल्समैन भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ वो सेल्स लेटर भी होता है. देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जहाँ पे सेल्समैन नहीं होते, वहाँ पे सेल्स लेटर लिखा जाता है. और कोई न्यू पॉलिसी है, कोई न्यू सर्विस है, न्यू प्रोडक्ट होगी, क्लाइंट्स को लिख रहे हैं, कस्टमर को लिख रहे हैं, बायर्स को लिख रहे हैं, कॉमन सिटीजन को लिख रहे हैं आप, राइट. और किसके लिए आप लिख रहे हैं? गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए. दिस इज नोन एज बिजनेस लेटर और सेल्स लेटर. बिसाइड दीज काइंड ऑफ लेटर्स there are different other types of letters in business. We will discuss in next video. Hopefully you like this video. Thank you.